Hello everyone, this is Darshita Singh and today we are going to learn chapter 2 of class 7th, exploring substances, acidic, basic and neutral. So in this particular chapter we are going to learn, as the name suggests, we are going to learn about the acids, the basic substances, some neutral substances, some indicators, and in this indicator we are going to learn three types of natural indicator, litmus and red rose and turmeric. And in this chapter only we are going to learn neutralization reaction. So this is all we are going to learn. So this is a big chapter. We'll cover this chapter in two parts. So in this video we'll be covering litmus and red rose, and in the further videos we'll be covering the rest of the chapter. Okay, two parts will be there. Perfect. Now let's move to litmus. Litmus, as we all know, is an indicator, acid-base indicator. It is naturally driven from lichens. What do we mean by lichens? Lichens is an organism which is formed by a symbiotic relationship of two organisms again, algae and fungus. Now what does this symbiotic relationship means? This is a mode of nutrition in which both the parties are benefited. So in this particular relationship of lichens, we see that fungus and algae, what they do, algae के पास we have you seen algae? Algae is in like it has chlorophyll and it is green in color. So जिसके पास भी अभी तक इतिहास गवाह है, जिसके पास भी अभी तक क्लोरोफिल आया, उसने खुद का खाना बनाया है. So algae is again an example of a organism जो खुद का खाना बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं autotrophic organism या autotroph. And fungus on the other hand, it doesn't know how to prepare food. तो algae एक मम्मी का काम करता है, and algae provide food to fungus and fungus provide shelter to algae. This is how it happens. So litmus is driven from this particular relationship only, this particular symbiotic association only. Let's learn litmus now. So litmus is driven with lichens. We all know what lichens is now. It is basically in two forms. It is present in solution form as well, and blue red paper strips. Okay, strips. Okay, perfect. Now let's see the color change, how it is an acid base indicator. How can I say? Let's see. So if let me draw a particular or flow chart kind of a thing, because मैं जब 7th में थी तब it was very difficult for me to learn all those stuff. So let me make easy for you. If this is red litmus, for example, then the acidic solution will show no change, but basic solution will turn red litmus to blue. On the other hand, if we talk about blue litmus paper, then in acidic solution it will turn red, but in the basic solution it will show no color change. Then what will happen if the substance is being neutral? Of course, there will be no color change. So this is all about litmus and lichens. So what we have learned till now, we have learned about litmus. Litmus is being derived from a symbiotic association of
Lichens. Lichen is a symbiotic association of algae and fungus. Okay, and litmus in particular is uh, it is found in both strips and solutions. It show color change in color, and that's all we have learned. Now let's do an activity to actually define what we have learned. So activity 2.1, in this activity we are going to learn that we are going to use some substances, some solution which is acidic, basic or neutral in nature, and then we are going to test those substances onto the paper, onto the litmus paper, or we'll see if the color change happens or not. So we are taking a lot of solutions over here: lemon juice, soap solution, amla juice, tamarind water, vagera vagera vagera. So let's complete this table now. So we all know that मतलब रेड लिटमस क्या हो जाता है, ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेड, लेट मी राइट इट हियर ऑल्सो बिकॉज हम लोग टेबल साथ में ही कंप्लीट करने वाले हैं तो थोड़ा मदद मिलेगी. द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू when it is basic solution, and the blue litmus turns red when it is acidic solution, right? Okay, perfect. Now let's do this table. Lemon juice I guess it is acidic in nature, so मेरे साथ साथ तुम भी ऐसे करो, ठीक है? तभी आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा, मैं तो करती रहूँगी, ठीक है? तो लेमन जूस इज ब्लू एंड सो लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर, तो ब्लू लिटमस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इट विल टर्न रेड, बट रेड लिटमस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सोप सोल्यूशन, ब्लू लिटमस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर. रेड लिटमस पे फ़र्क पड़ेगा एंड इट विल टर्न ब्लू. आंवला जूस, again it is acidic in nature, so the blue litmus will turn red. On the other hand, red litmus, there will be no color change. Tamarind water is, I guess, acidic in nature, so it will turn blue litmus to red and red litmus will show no color change. Vinegar is again acidic, it will turn blue litmus to red and the red litmus will show no color change. Baking soda solution, no color change to blue litmus, पर red litmus पे there will be a color change from red to blue. Lime water is again basic, no color change in blue, but blue to red to blue in red litmus. Tap water is neutral, water तो neutral ही होता है, so it will show no color change on blue as well as red. वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन अगेन बेसिक है, तो ब्लू पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, रेड पे आ जाएगा ब्लू. शुगर सोल्यूशन न्यूट्रल, तो दोनों पे कुछ नहीं रहेगा. सॉल्ट सोल्यूशन न्यूट्रल, दोनों पे कुछ नहीं रहेगा. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द टेबल. इस टेबल का सोल्यूशन है. इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. ओके, table 2 में what we have to do, we have to categorize those substances into 3 groups. Group A will be acidic substances. Let me write over here, acidic. Group will be basic substances. Group C will be neutral substances. Neutral की spelling सही है? सही है. चलो आगे बढ़ते हैं. एसिडिक सब्सटेंसेस होंगे हमारे पास लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर एंड व्हाट नॉट, मतलब विनेगर भी, सॉरी विनेगर. एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी विल बी like group B is basic and group C is neutral.
और ये दोनों ग्रुप तुम लोग भरोगे, मैं नहीं करूँगी ये, मैंने वैसे भी एक टेबल भर के दिखा दी है, अब खुद कुछ काम करो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर लाइम वाटर। लाइम वाटर हमने पहले भी करा है, इट इज़ अ बेसिक सोल्यूशन। लाइम वाटर इज़ अ बेसिक सोल्यूशन, येस इट इज़, येस। सो हाउ डू वी प्रिपेयर लाइम वाटर? लाइम वाटर का जो वो केमिकल नेम है वो है, एक सेकेंड, हाँ, लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। How do we prepare calcium hydroxide? We prepare it by adding calcium oxide into water after like settling, after leaving the whole matter for few seconds, for few minutes, वो अपने आप ही हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.2। In this activity we are going to taste some substances, but like of course there's a caution, should never taste unknown substances कि चलो आज हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट करते हैं, मर मुरा जाओगे, मत करना। ओके, so acidic substances are basically sour in taste. Okay, एसिडिक सब्सटेंसेज आर सावर इन टेस्ट। कैसे पता हमको? सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। सिट्रिक एसिड नींबू में मिलता है, ऑरेंजेस में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन टमेटोज। तो एसिड सावर है, और बेस क्या है? बेसिक सब्सटेंसेज आर बिटर इन टेस्ट। अब आई डोंट नो कि सोप सोल्यूशन को कैसे उन्होंने टेस्ट करा और शैम्पू सोल्यूशन को कैसे उन्होंने टेस्ट करा, आई डोंट नो, मुझे उसमें जाना भी नहीं है। उन्होंने बता दिया, मैंने मान लिया, नेवर टेस्ट दैट। तुम लोगों को करना है करो, मरो, मुझे नहीं मतलब है, मैं नहीं करूँगी। सो बेसिक सब्सटेंसेज आर बिटर इन टेस्ट। ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो सोपी। जैसे सोप को, ये तो तुम कर सकते हो कि सोप वगैरह उसको टच करोगे तो यू फील सोपी। शैम्पू सोल्यूशन को टच करोगे, सोपी स्लिपरी फील होता है, ठीक है। सो दे आर बेसिक, वी ऑल नो दैट। परफेक्ट, सो आगे बढ़ते हैं। दिस इज रिकैप, लेट्स डू रिकैप। हमने लिटमस टेस्ट करा। लिटमस टेस्ट करने पे हमें क्या पता चला कि व्हाट आर द सब्सटेंसेज विच आर acidic, basic and neutral substances, and also the color changes for real. Okay, then we grouped those substances into acidic, basic and neutral. Acidic वाला मैंने करा, basic, neutral तुम लोग करोगे। Then we prepared lime water. Lime water is again, its scientific name, chemical name is calcium hydroxide, and calcium hydroxide is lime water, जो कि बनता है calcium oxide plus water. Then we learned about the taste of acid, bases and salt. Activity 2.2, yeah, 2.2. तो acidic substances are sour in taste, oxalic acid, citric acid. Basic substances are slippery and soapy, and they are bitter in taste. Perfect, आगे बढ़ते हैं। Red rose as an indicator. So how do this particular indicator works? इसके लिए we have to prepare this indicator. Red rose लेना है, crush those petals, put hot water in it, in a tumbler, put the crushed petals into it, leave that whole matter for 5 to 10 minutes. Then you will observe that the whole solution is now like it's made. Now we can test it. So let me tell you, फिर we'll do experiment also. So let me tell you कि in acidic solution it show no color change, that is it remains red. But in basic solution it show green color. And just like this rose petals, बहुत सारे अदर इंडिकेटर्स आर ऑल्सो देयर, लाइक बीटरूट हो गया, पर्पल कैबेज, टर्मरिक वी आर गोइंग टू लर्न बाय द वे।
इंडियन ब्लैकबेरी, रेड हिबिस्कस, ये सब भी इंडिकेटर्स हैं. ओके, ये एग्जाम्पल है. इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट. Activity 2.4. This activity is particularly about the red rose that we are going to that we have just studied. So we are going to do and learn it by experiment now. So this activity uses the rose extract and the rose solution that we have prepared. And in both the test tube, it was in test tube A it was rose solution, and in test tube B it was rose solution, which was like both of them was red pehle. But now, after adding lemon juice to it, to solution A, lemon juice अगर solution A में डाल दिया, so lemon, it has citric acid, so of course there will be no color change, or the red color will remain. And B test tube में we have added soap solution, so it turns green. Here you can see. Okay, this is what the whole experiment says. Again this table has come. खुद करो, मैं नहीं करवाऊँगी. चलो एक करवा देते हैं, इतना भी जुल्म नहीं करना चाहिए. Okay, so we have जैसे lemon juice है, so what we have to do, we have to here write the nature of the substance, और इधर हम लोगों को change लिखना है, color change. So lemon juice, there will be like no color change, or the red color will remain. So this is no change in red, and the substance is acidic in nature. Okay. And soap solution आंवला जूस खुद करो. 2.1 में जितने भी examples थे उनका भी test करके खुद करो. Perfect. Now this is my favorite fascinating fact from the whole chapter. बहुत सारे fascinating fact है इसमें, but this is my favorite. Why? Because let me tell you, this is a flower called hydrangea flower. इसमें what happens is it changes color due to the pH level of the soil. जैसे if the soil is acidic in nature, the flower which will be grown would be blue in color. But on the other hand, if the whole pH level of the soil is basic, then it is the flower which will be grown, it would be pink or red in color. So the fascinating fact over here is that gardener has the control कि उसको कौन सा flower grow करना है. And honestly my favorite color is blue, तो मैं तो पूरे garden में acidic pH level रखती अपने soil का. So that was it. Fascinating fact यही था. Let's do recap and then we'll end the video. Okay, so क्या क्या पढ़ा हमने. हाँ, रेड रोज we have learned कि रेड रोज में we done the experiment and we found that red color is for acidic substances and green color is for basic substances. And what next? फिर हमने टेबल कंप्लीट करनी है, वो तो तुमने ही करनी है. एंड द फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट हाइड्रांजिया फ्लावर. दिस वाज माय फेवरेट फैक्ट फ्रॉम द बुक, तो इसको याद कर लेना प्लीज़ मेरे लिए. सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो. आगे का टर्मरिक एंड ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल बी कवरिंग लेटर. थैंक यू. दैट्स इट फॉर द वीडियो. हैव अ नाइस डे.